आज के इस लाइव सेशन के जरिए हम बात करेंगे दिसंबर CTT 2022 इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स 1 या 2 नंबर जो है आपको CTT दिसंबर 2022 में देखने को मिल सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी रखे हैं तो उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगा। आज इस टॉपिक के माध्यम से हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। बात करेंगे कि ये लैंग्वेज स्किल्स होता क्या है। तो इस लैंग्वेज स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। लैंग्वेज स्किल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा हम बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स अगर किसी के अंदर में है तो उसके पर्सनालिटी में 4 चांद लगाता है। एक तो प्रैक्टिकल लाइफ उसका बहुत अच्छा हो जाता है, इंटरव्यू उसका बेहतर जाता है, साथ में आप कहीं पर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने बातों को तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो स्टाइलिस्ट एंड बेहतर और लाजवाब हो जाता है। तो बेहतरीन क्लास के लिए या बेहतरीन एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए कि आपको लैंग्वेज स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, हाउ टू टॉक, which skills are very important for you, which skills play pivotal role in the development of the students. Nowadays we see that there is a lack of language skill in our youth students. So we are the teachers who can make the students understand about the language skills. Today I am going to express a very beautiful explanation. The topic is language skill. You know very well that language skills are very important, and without language skills we can't be able to approach the things properly. So we have to develop our language skills. As you know that listening, speaking, reading and writing are 4 integral skills of a language. I have spoken that listening, speaking, reading and writing are 4 integral skills of a language. लैंग्वेज के 4 महत्वपूर्ण स्किल्स हैं जो है लिसनिंग। सबसे पहले लिसनिंग आता है जिसे हम LSRW के नाम से जानते हैं। LSRW, L से हो गया लिसनिंग, उसके बाद हो गया पहले सबसे पहले बच्चा को लिसनिंग करने को सिखाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लिसनिंग करे। उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग का जो कार्य है सबसे किसी भी लैंग्वेज को सिखाने में सबसे लास्ट में रखा जाए। राइटिंग का जो कार्य है सबसे लास्ट में रखा जाए। किसी भी स्टूडेंट को आप अगर लैंग्वेज सिखाने का इफ़ यू आर ट्राइंग टू टीच अ लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स, definitely first of all you have to follow the sequences of language skill. There are 4 integral parts skills of a language. The first one I am going to speak, that is listening, second is speaking, third is reading and fourth is writing. Negligence of any of them would lead to failure in learning language. अगर इन चारों में से listening, speaking, reading and writing स्किल में से किसी भी 4 स्किल्स में से अगर आप नेग्लिजेंस करते हैं तो आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। भले आप लैंग्वेज को रट करके बोलेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप उसके उसके सेंस को नहीं समझ पाएंगे और आप सेंस आउट नहीं कर पाएंगे और अपनी बातों को बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल। लिसनिंग और रीडिंग जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लिसनिंग और रीडिंग जो है वो क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स है, लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग जो है प्रोडक्टिव स्किल्स है। वही स्पीक कर सकता है जिसके हाथ में प्रोडक्टिविटी है, जो जिसके अंदर में क्रिएटिविटी है। तो स्पीकिंग और राइटिंग की बात है, राइटिंग भी वही कर सकता है जिसके अंदर में प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो इनोवेटिव है, इनोवेशन है उसके अंदर में। तो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा राइटिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप होगा, आई थिंक डैट उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव स्किल जो है बढ़ेगा। मुझे लगता है कि रीडिंग और लिसनिंग जो है क्या है, तो रिसेप्टिव स्किल है, लेकिन अगर बात करते हैं राइटिंग और स्पीकिंग का तो ये प्रोडक्टिव स्किल्स है।
जो भी लोग लाइव हैं शेयर कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टॉपिक जो है लैंग्वेज स्किल्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमने बताया लैंग्वेज स्किल्स क्यों आवश्यक है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, और दूसरी बात है किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतर रहता है, लाजवाब रहता है, और आपकी तैयारी भी जो है इंग्लिश आप रखे हुए 30 आउट ऑफ 30 आप ला सकते हैं अगर आपका जो है ये टॉपिक अच्छा है, और भी टॉपिक जैसे हमने चर्चा किया है। अब हम बात कर रहे हैं मास्टरी ओवर दिस 4 स्किल्स बाय द लर्नर्स इंजेक्ट इनटू हिम कॉन्फिडेंस एंड इनहेंस साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ब्रिंगिंग हिम क्लोजर टू व्हाट ही एस्पायर्स फॉर। कहने का मतलब है साइकोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स जो है उसका बेहतर होता है, साथ में उसके अंदर में जो है कॉन्फिडेंस जाता है, और उसका साइकोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही बेहतर होता है अगर वो लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इन द टर्म्स ऑफ 4 स्किल्स, मतलब इस 4 स्किल्स के आधार पर ही लैंग्वेज को टॉट किया जाता है या असेसमेंट किया जाता है। दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो LSRW यह एक ट्रिक है जिसे आप ब्रेन में रखें। LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। जब आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे चीज़ों को सुनाने का पर लिसनिंग पर जोर डालें, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और लास्ट में राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप करवाने का प्रयास करें। The proper order of procedure involved in learning a language is listening। अगर प्रॉपर ऑर्डर की बात करें तो लिसनिंग पहले आता है, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद राइटिंग, जिसे हम LSRW कहते हैं। लैंग्वेज स्किल्स को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए LSRW का जो प्रॉपर ऑर्डर है उसको फॉलो करना होगा। L से लिसनिंग, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। ये चारों स्किल्स किसी के अंदर में बहुत बेहतर है तो डेफिनेटली उसका लैंग्वेज स्किल्स बेहतर है, और बहुत बेहतर ढंग से वो अपनी बातों को डिलीवर कर सकता है, बहुत ही बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, और फैक्चुअल चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से सीक्वेंस वाइज जो है डिलीवर कर सकता है और समझा भी सकता है। LSRW इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा उपार्जित, भाषा को प्राप्त करने का एक साधन है, क्योंकि लैंग्वेज जो है सबसे पहले उपार्जित है, क्योंकि हम अपने परिवार में लैंग्वेज सबसे पहले सीखते हैं, उपार्जित लक्षण है ये एक्विजिशन के जरिए। लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज रिसेप्टिव स्किल्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिसनिंग और रीडिंग को कौन सा स्किल्स कहा जाता है, तो रिसेप्टिव स्किल्स कहा जाता है। उसी तरह व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल्स, क्योंकि बिना प्रोडक्टिविटी के प्रोडक्टिव स्किल्स है स्पीकिंग और राइटिंग, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड है। अगर इस स्किल्स को आप बहुत बढ़िया से आपको मैनेज करना होगा, ये स्किल्स एक दिन में नहीं आता है। कहीं पर आप बातों को जो आप रखते हैं उसको रखने का लहजा, तरीका और उसके परोसने का तरीका बहुत ही मायने रखता है। तो ये जो हमने बताया स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, और रिसेप्टिव स्किल्स में आ जाते हैं लिसनिंग और रीडिंग आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं, अब आगे बात कर रहे हैं कि ऑल लैंग्वेज लर्नर्स विल नीड टू डेवलप देयर स्किल्स इन ईच ऑफ दिस एरियाज। लैंग्वेज क्लास शुड इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस ऑल स्किल्स। और लैंग्वेज क्लासरूम में चाहिए कि इन चारों चीज़ों से संबंधित जो है एक्टिविटी जो है बच्चों के बीच में जो है क्लासरूम में होनी चाहिए। दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वुड मस्ट हैपन इन द क्लास, because without the activities of this language skills will not be improved. We all know that listening should be preferred in the classroom, as well as reading should be done, and writing and speaking should be done also in the classroom to mastery over the language skill, to mastery over language. If you would like to master the language, definitely you should have the 4 language skills that what we have discussed just now. Now, according to NCF National Curriculum Framework 2005, speech and listening, reading and writing are generalized skills, and children mastery over them becomes the key factor affecting their success at a school. If you would like to succeed in your school and in your life,
Definitely, NCF has given the guidelines as speech, listening, reading, writing. These all are generalized skills, and children's mastery of her them, they can become success. They can become successful after mastering of her these skills. So that I love to say that I would like to say that all of the students they who are online, please share this video and do subscribe to my channel, because I am delivering, I am talking about language skill. It is important to understand the language skill, because it will propagate, it will develop, it will evolve your personality. Your personality will be developed, will be progressed after getting these types of skills and improving reading, writing, speaking, and listening. Therefore, I always tell you to become a good listener, be a good listener. Without becoming a good listener, during watching the video, you should be a good listener, because without becoming a good listener, you can't be able to express anything in your life, and you can't be able to be a good speaker. Now I am talking about listening skill. Listening comprehension is the receptive skill in the oral mode. Listening skills are the ways to help someone listen something more effectively. As it is said, listening is the hardest thing in the world. Listening जो है सबसे कड़ा चीज़ है इस दुनिया में. बहुत सारे लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर बोलना ही पसंद करते हैं. तो प्लीज़ आप सुनने की क्षमता को आप बढ़ाइए. जितना ज़्यादा आप सुनने की क्षमता को आप अच्छा लिसनर बनेंगे, डेफिनेटली आपके अंदर लिसनिंग स्किल जो है डेवलप होगी. ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं. जो बहुत बेहतर ढंग से सुनते हैं वही बहुत बेहतर ढंग से बोलते हैं. और ये ऐसा भी कहा जाता है कि लिसनिंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. सबसे कड़ा चीज़ अगर कोई चीज़ है तो सुनना. लिसनिंग कोई नहीं सुनना चाहता इस दुनिया में. आप जितना सुनेंगे उतना बेहतर बनेंगे. वन शुड गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स वर्ड्स व्हाइल हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड लिसन टू व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट. अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. कई बार कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में भी आता है लिसनिंग स्किल. कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है कि हम स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों आता है. तो क्या करते हैं लोग कि लगातार सामने वाले जो है वो बोलते ही रहते हैं, सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं है. हमें सामने वाले जो बोल रहे हैं उनकी बातों को भी सुनना चाहिए. इससे क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है और बेहतर समझ होती है और बेहतर जो है कम्युनिकेशन जो है हो पाती है दो लोगों के बीच में, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि सामने वाले को चीज़ों को आप सुनने का प्रयास करें. बिकम अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर, because without becoming a good listener you can't be a good speaker, you can't express your feelings in front of anybody. So जब आप बातें करते रहते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होने चाहिए, ना कि वन वे कम्युनिकेशन. और वन वे कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की, जिन लोगों में कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, लिसनिंग स्किल की कमी होती है, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं. जैसा कि हमने बोला, लिसनिंग इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, it is said. Therefore I tell you guys, become a good listener, because without becoming a good listener you can't be a good speaker. Now listening is the process of receiving. If you listening is the process of receiving. If you listen to somebody very carefully, definitely something you are receiving. So listen to somebody very carefully, constructing meaning from and responding to a spoken and non-verbal message. If you are receiving something, if you are listening something, then you are constructing meaning from and responding to a spoken and non-verbal message. The persons who have spoken, you have received the messages and you are trying to respond to the messages what have been spoken. Now it is an active process of getting information ideas. It is an active process of getting information ideas. So I hope that you have understood the concept of language skill. As I have discussed, there are 4 integral parts of language. That is, we have discussed, that is listening, speaking, reading and writing. These 4 pillars can develop your language and you can master overall language. Without having the knowledge of these 4 skills, you can't be able to express your feelings in writing, speaking, reading
You have to understand, because your comprehension understanding skill will not improved if you don't read. So reading habit must be developed, a speaking habit must be developed, and listening habit must be developed, and writing habit must be developed. You have to write, you will have to write to develop your language skills. Now, listening situations. What are the listening situations I am going to talk about? That is, listening situations can be classified into two kinds. Listening situations can be classified into two kinds, which are as follows. Interactive listening. I am talking about interactive listening. It should be done, it must be done in your classroom, where you are talking, where you are talking, you have started talking. This should be interactive listening. It includes face to face conversation and telephone calls. I know that you also know that interactive listening, it includes face to face conversation. Suppose that you are doing face to face conversation and you are talking on the phones, you are talking on the telephone calls. It means that you are doing interactive listening, because interactive listening means that someone is speaking, you are listening and you are responding what he is speaking, what he is delivering. You are receiving and you are responding. After listening him, after listening to him, you are responding something. Now, in which we alternately listen and speak, and in which we have a chance to ask for clarification. Interactive listening, in interactive listening you have the chance to clarify the things, what to whom you are talking, he is saying something to you. You can be able to clarify the things what he is speaking. Now, non-interactive listening, it includes listening to the radio. Suppose that you are listening to the radio, suppose that you are listening to the TV, you are listening, watching the films, you are watching the lectures, you are watching the sermons, listening to sermons. In such situation, we usually don't have the opportunity to ask for clarification. I do not ask for clarification. This types of situation is known as non-interactive listening. But sometimes we see that interactive listening is done on the phone, face-to-face conversation is included. Like that, interactive listening is it includes interactive listenings includes face-to-face conversation and telephone calls. But if we talk about non-interactive listening, that is related to it includes listening to the radio, watching television. During watching television, you do not want clarification from the videos, what is being seen to you, what you are watching. So that I hope that this video is very successful and very nicely I am explaining it very nicely, so that you should share this video among your friends. Now, TV lectures, in such situation we usually don't have opportunity to ask for clarification, slowing down or repetition. Now, as speaking skills, we have talked about, I have explained about listening skills. And second skill, as I have told that the proper order of language skill is, I have told you, that is LSRW. Remember this proper order: LSRW, listening, speaking, reading and writing. Speaking skills, speaking is a productive or expressive skill in oral mode and a crucial part of learning. This is the crucial, important, pivotal part and parcel of learning. Without it, we can't be able to learn anything. Speaking is a productive skill. It is expressive skill in oral mode. It is a crucial part. It is a crucial part of learning. A speech is normally produced by manipulating the air stream coming out of the lungs. Speaking is an act of conversing or expressing one's thoughts and feelings in a spoken language. Suppose that you are expressing, you are converting, you are converging, you are expressing one's thoughts and feelings in a spoken language. To speak other implies imparting information. It may be from an informal remark to a scholarly presentation to a formal address. Now, a speaking skill is a productive or expressive skills. As speaking situations, what are the speaking? As I have talked about listening situations, interactive listening and non-interactive listening. Now we are talking about, I am talking about speaking situations.
speaking situations, there are three kinds of speaking situations in which we find ourselves. That is interactive or partial interactive. Interactive and partial interactive. It includes face-to-face situation, face-to-face conversation and telephone calls in which we alternately listening and speaking, in which we have a chance to ask for clarification, repetition, or slowing down from our conversation partner. Now, partially interactive. Some speaking situations are partially interactive, such as when giving a speech to a live audience. Suppose that I am live and partially you are interactive. You are talking to me. You are commenting something. You are asking something. Partially you are commenting. That is to be known as partially interactive class. The speaker can see the audience and judge from the expressions on their faces, body language, whether or not he or she is being understood. Non-interactive. Few speaking situations may be totally non-interactive, such as when recording a speech for a radio broadcast. That is non-interactive. Now I have explained the listening skills and speaking skill. In the next video, I have to explain. I can be able to explain reading skill and writing skill, and the situations of reading skills and situations of writing skill, types of writing skills and types of reading skill. I am able to explain. I will explain in the next video. How is the video? You must comment, you must share, you must like. You should like to like our videos. Definitely this is a very nice session. I hope that it will be a very nice session. It is a successful session. So you have enjoyed the sessions and share this video. Please do subscribe. I do a hard work for you and you do not subscribe. You refuse to subscribe. You why to subscribe? I see that a lot of people watch the video but they do not subscribe. Please subscribe. Okay, I request you to subscribe to my to the channel Academy of Science and Arts by author Prakash sir. Bye bye. Take care. Hope to see you again. Have a nice day. Thank you.